Hello students. So today we are discussing about Foster-Seller discriminator. It is one of the FM demodulator circuit. So this is the widely type of discriminator which is used. Okay, so this is the circuit arrangement of Foster-Seller discriminator. Here what we have this circuit comprises of inductively coupled double tune circuit. Okay, in which both this primary and secondary are tuned to same frequency, intermediate frequency. We have already known this intermediate frequency for FM signal. It will be 10.7 megahertz. Okay, and there in this circuit, furthermore, this there is a blocking capacitor. This not the blocking capacitor. There is a capacitor which will be CC. This what is the function of this capacitor? Is this it blocks the DC from primary from secondary, and it also couple the signal frequency from primary to center taping of this secondary. ठीक है, so that ये जो primary voltage जो है इस इंडक्टर के थ्रू जो है सिग्नल वोल्टेज इट विल अपीयर इन दिस इंडक्टर. ठीक है, फर्दर मोर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, ये जो हमारा ट्यून सर्किट है, दिस इज ट्यून टू द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. ओके, सो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में ये दोनों ट्यून्ड होगा हमारा जो ट्यून सर्किट है हमारा. तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो आपने देखा ये डायोड लगे हैं D1 D2. ओके, सो व्हाट विल हैपन, this center tapping of this secondary has an equal and opposite voltage across this half winding. ठीक है, इक्वल, लेकिन ये क्या है, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा इन दोनों के बीच में. ठीक है, सो दैट इट इज इक्वल बट इट इज इन ऑपोजिट वोल्टेज. So this V1 and V2, this V1C and V2C are equal in magnitude but opposite in phase. Okay, and same way this diode D1 and D2 will operate. We will see how it will operate. तो सबसे पहले क्या है, और आउटपुट जो है, आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट इज सेम विल बी the K into difference between these two, because this is equal in magnitude but is opposite in phase, V1C and V2C, and this will further provide V10 and V20. We will see how it will give the 0 volt output voltage, positive or negative, depending on the shifting of this FM signal frequency with respect to this intermediate frequency. ठीक है, we will see it in later in this lecture. तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि सबसे पहले अगर एंड वन मोर थिंग, ऑल ऑफ यू नो दैट द आउटपुट विल बी अ लो पास फिल्टर. तो जो जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा एम. ओमेगा एम क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट, अगर पॉजिटिव हाफ है, इनपुट अगर पॉजिटिव है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या है, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायोड है, ये इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा. तो D1 विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड, D1 ऑन होगा, D1 विल कंडक्ट बिकॉज ऑफ इज फॉरवर्ड बाइस्ड, बट D2 जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या है, रिवर्स बाइस्ड की वजह से D2 ऑफ होगा. तो इन दिस केस दिस V30 विल एग्जिस्ट बट V40 विल नॉट. तो V40 ऑन द अदर हैंड फॉर नेगेटिव हाफ ऑफ दिस इनपुट, नेगेटिव हाफ में क्या होगा, नेगेटिव हाफ में यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा. तो अगर नेगेटिव है तो ये क्या है, ये डायोड D1 क्या है, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, तो ऑपोजिट हो जाएगा, D1 विल बी ऑफ एंड D2 विल बी ऑन. सो इन दिस केस V30 विल बी 0 एंड V40 विल एग्जिस्ट, क्योंकि ये ऑफ है. अगर ऑफ है तो करंट ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो करंट कितना है ओपन सर्किट में, 0. तो 0 तो R3 के अक्रॉस क्या है, 0 वोल्टेज फ्लो करेगा, 0 करंट फ्लो करेगा. तो R3 के अक्रॉस अगर 0 करंट फ्लो करेगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा, R3 into 0 0. तो V30 0, V40 will have some voltage because D2 will conduct. ठीक है, so during this one complete input voltage cycle for positive half cycle, the output will be V30 minus of V40 because it is in opposite of polarity. Okay, so which in turn will proportional to this V10 and V20, this correspondingly. तो क्या होगा, ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी K into V10 minus V20. Okay, so this is all about the operation, how we will get the output. So this as I've told you, the input of this detector is a double tune circuit, each is tuned at the intermediate frequency Fi.
ठीक है, which is a standard frequency of 10.7 megahertz for an FM system. Of course, for an AM system, it will be a 455 kilohertz, which we learn in the super heterodyne receiver. So at the center frequency, अगर center frequency FI है, तो अगर हमारा जो FM signal input signal है, that will be equals to intermediate frequency. So for that, the input of the circuit will behave as a resonant circuit. ठीक है, अगर वो इनपुट क्योंकि ये जो ट्यून्ड ये जो सर्किट है हमारा इनपुट सर्किट जो है जो डबल ट्यून सर्किट है वो हमारा ट्यून किस पे हो रखा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। अगर इनपुट जो हमारा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर एफआई सेंटर फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो क्या होगा, दैट विल दिस सर्किट विल बिहेव एज एन रेजोनेंट सर्किट और रेजोनेंट सर्किट और फर्दरमोर इट विल एक्ट एज एन रेजिस्टिव नेटवर्क। ठीक है, रेजिस्टिव नेटवर्क से क्या होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि वो रेजोनेंट सर्किट है और अगर फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम हुई देन इट विल अकॉर्डिंगली बिहेव एज एन कैपेसिटिव और एन इंडक्टिव सर्किट। जैसे हम एक पैरेलल आरसी और सीरीज आरएलसी सर्किट देखते थे कि जब रेजोनेंट सर्किट होता था देन एक्सएल विल बी एक्सी एंड द इंपीडेंस विल बी इक्वल्स टू आर, दैट इज अ रेजिस्टिव, इट विल एक्ट एज एन रेजिस्टिव नेटवर्क इन केस ऑफ रेजोनेंट सर्किट सीरीज आरएलसी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम अगर हमारा जो एफएम सिग्नल जो है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर आता है तो इट विल एक्ट एज रेजोनेंट सर्किट। अदर देन दैट if it is more or less than this intermediate frequency it will act as behave as an capacitive or inductive circuit. Okay, so at the frequency of this operation this coupling capacitor will act as short circuit. Okay, and the input tune circuit and inductor, this L3 are effectively conducted in parallel so that have a phase difference of 90 degree or more than 90 degree. ठीक है, depending on the frequency of the input signal. So whether it is equal or more than or less than the center frequency, उस हिसाब से phase difference आएगा. The secondary of this tune circuit is a center tap transformer so that V1C and V2C voltage are equal in magnitude but have a phase difference of 180 degree. So furthermore, this voltage V10 and V20 can be found by phasor addition of this V1C and VL. So phasor addition say we will get this V10 and V20. Okay, and this in this output this R3, R4, C3 and C4. What we have this low pass filter having the lowest cutoff frequency of modulating frequency component contained in the signal. Okay, which is omega. So this output voltage is proportional to the difference between this V10 and V20. Okay, so for the detection of this signal, it is found that there is a variation in the output detected voltage which is proportional to the variation of frequency, input frequency with reference to the center frequency Fi. हमारी center frequency क्या है? Intermediate frequency. Okay, so if we discuss about some this phasor diagram of this how it will respond if the frequency is equal to this intermediate frequency, then it will be give the V10 will be equal to V20. This will equal to V10 will be equal to V20. So in this case, what will the output? Output will be the difference between these two. So it will be 0. So output will be 0. On the other hand, if the intermediate frequency is less than the incoming frequency, then it will be V10 is greater than V20. We can easily see it in here. So in this, what we have, if V10 is greater than V20, then output voltage will be positive. And on the other hand, in the last case, if this intermediate frequency is greater than incoming frequency, then it will be output voltage will be negative because of V20 is greater than V10. Okay, so what it means that incoming frequency of FM signal at this incoming signal frequencies of this FM signal at the input of this discriminator are being discriminated. Okay, and at the output voltage is obtained proportional to the variation of incoming frequency with respect to this center frequency Fi. Okay, so what will we have here? The output of the discriminator, may be 0, positive or negative. ये 0 कब आया जब इक्वल है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में, पॉजिटिव कब आया जब ज्यादा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से, और नेगेटिव कब है जब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से कम है.
So the output voltage will be of the discriminator depend on the incoming frequency of the signal, and the output voltage what we have, the message signal, this output voltage is proportional to the variation in the frequency component with respect to this intermediate frequency. So in this way the modulating signal has been recovered from the incoming FM signal. So this is how it works. So this is the Foster-Sele discriminator. Okay. So what will happen? So there is a disadvantage associated with discriminator, that any variation in the amplitude of this this input FM signal due to noise then modified the discriminator characteristics. It will modify the discriminator characteristics. So what will you have here? So ये जो undesired frequency component जो होगा, जो amplitude variation की वजह से आएगा, तो वो आउटपुट को डिस्टॉर्ट कर सकता है. तो ये जो डिस्टॉर्ट करेगा उसको लिमिट करने के लिए वी कैन यूज द लिमिटर सर्किट इन FM रिसीवर, सो दैट द एम्पलीट्यूड वेरिएशन can be the effect of this amplitude variation in FM signal can be minimized by using limiter circuit. Okay, so to there is a circuit over this to improve this one, improve this deviation of this original signal from due to this amplitude variation. So we can use the ratio detector. So ratio detector is similar to this Foster-Sele discriminator. तो ratio detector में क्या होता है? It does not respond to amplitude variation और लिमिटर भी नहीं चाहिए उसमें. तो उसमें होता क्या है कि just यही सर्किट है, this D2 will be reversed, the polarity of this D2 will be reversed, the circuit will be similar to this, D2 will be reversed and the output will be taken from the, if it is a, here we have resistor, if we see like this, if we consider resistor here center tap resistor that shunt the load impedance of two diodes, ठीक है. ये diode जो है this will be in opposite direction. Okay, this will be in opposite direction, it will be connected here, and what we will have here, we get the output from here in that circuit. The output voltage will be from here, okay, rather than getting from there. Okay, so output voltage, what we have, the output voltage will vary with the input signal. What we have in input signal frequency FN, exactly in the same way as it does in Foster-Sele discriminator, but its magnitude is reduced to half. ये क्योंकि डायोड ऐसा है तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है that will be half, and of course the what will happen here, the this amplitude variation के कारण जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था that will be sort out. So that will be a circuit of ratio detector. So it is slightly improvement over Foster-Sele discriminator. The circuit is more or less similar, but we have to take the output from here, and polarity of diode D2 is reversed here. So this is all about this discriminator, phase discriminator. So if any doubt still there, then you can ask me. So do let me know. Thank you very much.